Hello, hello. Okay, ये इसका भी मौका मिलेगा. एक सेकंड. So we'll start with you, sir. Reactions have been through the roof. गाना जो है it's already become so popular. आज ट्रेलर का टाइम है. आज पहली बार सुनने को मिलेगा आपके इस कैरेक्टर के बारे में. How's the reaction been till now? जिनसे भी आपकी बात हुई है about the teaser and the song. Hi. Can we turn up the mic, please? So, the strange thing is that, whenever I see, the trailer or the song, and I see Om Puri, Omji in this, it just kills me. Because, I've done a lot of work with Omji since, years and years. And one moment he was there, and the second one he was gone. So it just, I don't actually enjoy watching the teaser or the song because I see him right there, and one morning we hear that he fell down and he was no more. This is my reaction. I don't know how you guys feel. I killed it for you, right? No, it's overwhelming. Kabir, I'll come to you now because the way he started with this entire story, I killed it. Right? I had to. Kabir, your journey with him, right from Ek Tha Tiger, then Bajrangi Bhaijaan, and now, what has changed? I'm sure something must have changed for you that now with the third film that you're doing, the whole relationship must have taken a different turn. Yeah, I think like any relationship, there's an evolution, and the more you work, the more time you spend together. Thought he's talking about Mini, not Mini. No, but I'm micro Mini. You begin to sort of understand each other's sensibility, understand each other's politics. Great. I think, a lot of people have told me that I've done 3 films with Salman, and really fortunate that in the country. But I've also managed to do 3 very different films. I managed to get subjects that both of us were equally excited about. Because the moment the two of us heard that story or decided that this is what... From what I've read, you wrote this film especially for him, but it's not the that we associate him with. Little boy, which I'd seen, and there was something about take the idea and adapt it to our context. And then once... And one visual of that black label ka kuch. So we put the two together and said there's an ad about 2 brothers I'd like to develop. And we thought it was a beautiful character, it was a nice... began, then I started developing the screenplay. Sohail, for me, you don't have to ask anything. It's a no-brainer. I have Salman Khan. I've got this, but when the cameras come on to play those real life, nothing. In fact, we just live. Otherwise, if you were to build in the screenplay a long shot and okay, let's proceed from here. You don't need to build. It's like a really emotional film. Okay, there's no heart or in tiger running or jumping but emotionally this was really draining. So every time that something messed me up. Now, if it was somebody else, me being a very huge problem, it would look so. The best thing, yeah, everyone knows that. So this is like really. No, they were happy that they said award function award. It became really easy for me because I was not actually when I was dubbing. It's embarrassing that a grown man standing there and it's a movie and you're dubbing there, gone to war or this goes, tears coming out. Okay, so it was a time where Biju Chacha, they came to see Uncle for me after a very long time. He says, how's it going? This is good. It's cool. So my dad smiled. So my dad said, yaar, tum kaise padha? For the next bit, I would request all of you to now turn off your cameras because now we're going to launch the trailer. वो बंद करने पड़ेंगे क्योंकि वो रात को 9 बजे वैसे आएगा लेकिन we can't. We're going to give it to you, but if you record it and then release it, it won't look nice. There's a lot of work that's gone into it, so please, if you could switch off. If you could switch off your cameras. हमारा press बड़ा ही आज्ञाकारी press है. तो आपकी बात हमेशा सुनेंगे. Request करो. रिक्वेस्ट तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ अगर आप अपना कैमरा जो है वो अब स्विच ऑफ कर दें. विभा ने सुन लिया. प्लीज बात थी
Just for the trailer. We'll be giving it in 3 hours anyway. Louder. Okay. Let the magic begin. Once again, if I could request. So, Mr. Salman Khan, the director of the film, Mr. Kabir Khan, Sohail Khan, and also now I would like to invite the producer and the CEO of Salman Khan Films, Mr. Amar Utala. So don't be surprised. You were completely comfortable in that chair. You don't want to get up. And the music director of the film, Pritam. किसी का चश्मा गिरा है. Once again, this now has आपके सारे जो सवाल हैं, आपकी मॉम का नाम भी उस नाम में है. She's a lucky charm for you, and इसमें भी she's a producer. You showed her the trailer. What was her first reaction जब film बनी? उन्होंने भी पहली बार कल ही देखा? Yeah, so she saw it yesterday. Actually, the whole family saw it. She said something really sweet. She said, for me." आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई. Got to see great, हो. So whatever we. मैंने प्यार क्यों किया? कौन बोला वो? वीर. अच्छा. Hello brother. That was Arbaz. Sorry. But that was, as we always say, that Hello Brother was one of the most expensive home videos anyone can make. Kabir, I have to ask you this question. From the time the first song debuted, Pritam da ye bhi, every song has one signature step जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं उसमें नाचते हैं, and they copy that. Conscious decision or it just happens? ये एक signature step होता है. Yeah, see, obviously there's something called the hook step, which everybody does try and get in their songs. But with Salman, there's always been an attempt that, Salman also believes that it should be a step that a child can dance to and can copy, because that's when they can truly enjoy that song. So it is, and also in this, the character is simple. Jassi is definitely not going to do any great moves. He will do simple moves. So I think in a certain sense, it comes organically into the film like that. So you're an award-winning choreographer now. Did you choreograph this step also? Rubbish is that. What Vaibhavi, yaar. But did you come up with this step, the hook step? It was no, it was by mistake. What is that? What thing? What Jagbumiya? It was by mistake. That's hero. Of course. ये step किसने किया? मैं कुछ और हुआ कुछ और, and I thought that I'm doing it. So आप हंसो मत. गानों के बारे में हम बात कर रहे थे. ये कहानी पता है. और Caterpillar being this, musical person, very soft, tender. तो उन्होंने वो Caterpillar को ऐसा लिया और बात करते करते उन्होंने वो फेंक दिया था कहीं से. ये फेंकना था. उन्होंने फोन फेंक दिया. दादा, people know the story ना, जब आप साइकिल भूल गए थे, फिर गाड़ी भूल गए थे. गाड़ी भूल गए थे, वाह. जाके कंप्लेन कर दिया पुलिस स्टेशन कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई. नहीं गाड़ी है, अब भी ली, चोरी हो गई. स्टूडियो चले गए, वहां से रिक्शा में आ गए वापस. Okay, one last question, but is it the toughest to compose for him because his songs, the larger than life personality, इनके गाने में भी वो झलकना चाहिए. Is it the toughest to make a song, Salman Khan? No, actually not. Obviously, एक तो सिक्योरिटी रहता है कि कुछ भी गाना बनाओ, आफ्टर ही एक्ट्स इन इट विल बी अ हिट. सो उसका कोई नहीं. बट ये मूवी बहुत, because the characters are like that, it's based in the 60s, so वो सब restriction रहता है with that. तो वो सब mind में रख के गाना बनाने में obviously थोड़ा सा it's not like that you can put any item song or anything. Like you have to keep every character in mind, the situations in mind. वो हल्का सा restriction तो रहता है, but उसमें ही मजा आता है ना. तो normal गाना बहुत बना है. मेरे हो गए, अब आपकी बारी है, तो अपने तीर जो है आप जरा कमानों से निकालें. आलोक पूछना चाहता है सबसे पहले.
मेरा सवाल आपसे है कि 60s में बेस्ड है फिल्म और नाम भी आपका लक्ष्मण है, सोहेल का भरत है, तो खुद की क्या तैयारियां थी कि 60 के दशक में अगर आप लक्ष्मण के किरदार में जाएंगे तो अपने लेवल पे आपने किस तरीके से? बहुत अच्छा सवाल है। कुछ नहीं। अमर सर, सच में कोई तैयारी नहीं थी अपने? हाँ, वो कुछ स्वेटर, शर्ट, ढीली पैंट और जूते पता नहीं कहाँ से मंगवाए कबीर साहब ने। यही तैयारी थी। जैसे कपड़े पहन लिए वैसे कैरेक्टर में घुस गए। नहीं, एक डिस्कशन होता है पूरे कैरेक्टर के बारे में, एक स्क्रिप्ट के बारे में। ऑब्वियसली इट्स अ होल प्रोसेस दैट वन गोस थ्रू। यानी गाने, जिस तरीके से गाना पिकअप कर रहा है रेडियो सॉन्ग, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हर तरफ सजन रेडियो टाइप का अब आलोक ही बोल रहा है उधर से। तो हाँ, तो ये तो गाना तो पिकअप होने ही वाला था, क्योंकि रेडियो है, रेडियो पे बजेगा रेडियो का गाना। तो जितने भी रेडियो वाले रेडियो का गाना तो रेडियो पे बजाएंगे, क्योंकि उनको ही फ्री फंड की पब्लिसिटी मिल गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान जी, आपने अभी ये ओमपुरी जी के बारे में बताया था, ओमपुरी जी के, कि आपने उनको बहुत मिस किया। अन्नूपुरी नहीं नाम है, ओमपुरी। वो अन्नू मलिक है। हाँ, अन्नू ही निकला था, बाद में साइड में पूछ लिया मैंने, ओमपुरी। तो मुझे पूछना था कि रीमा लागू जी भी आपकी स्क्रीन मदर है। हाँ, जी। उनके लिए So I've just lost, we just lost VK sir as well, he was very close to us and amazing person. I mean, he was our hero. And then अभी मैं लीवा में शूट कर रहा था तो सुबह को पता चला कि रीमा जी भी नहीं रही। तो it's really sad that I've lost, three very close people almost, in the last कुछ 3-4 महीने में। और मुझे एक सवाल पूछना था कि आपका जो भोलापन है रियल लाइफ में, वो पिछली 2 फिल्मों से नजर आ रहा है। वो ढोंग है। तभी एक ट्यूबलाइट में भी आप भोले भाले नजर आ रहे हो, बजरंगी भाईजान में भी थे। तो क्या ये आपका आगे, ये जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, हाँ, अब सोच रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा सा बन जाऊँ। थैंक यू। सलमान यहाँ राइट साइड में, सलमान सॉरी लेफ्ट में, सलमान देखा खान नवभारत टाइम से। मुझे लगता है आप तीनों चला, क्योंकि ये ईद पर कबीर के साथ में, कबीर आपके लिए सलमान के साथ में, तो मैं तीनों से जानना, ईद पर फिल्में ईद पे ही आई है, फिल्म स्पेशल होती है आई थिंक, तो हर फिल्म स्पेशल बन जाती है। आई थिंक आई एम एज एक्साइटेड अबाउट दिस। तो बनाओ क्यों खराब, so, आपको फैसिनेट नहीं ऐसा लगे कि भाई फिल्म को स्टार्ट करना चाहिए। सलमान, This journey has been wonderful. I've been following his films from New York to Tiger to Bajrangi Bhaijaan, now Tubelight. इनमें एक खासियत है क्या, he creates a world, वो एक दुनिया क्रिएट करते हैं। जब मैं उनकी फिल्में देखता था तो एज अ टेक्नीशियन, in fact I didn't think that I would have the opportunity to be on the same set as Kabir, because I can't be an assistant anymore, but I got this opportunity to be as an actor. So for me, doing this film was actually a learning process where he handles the production, and he does everything with a lot of ease. So for me, this film has been very special. It's been a learning process. The kind of cinema that I got to be a part of, practically, as an actor, as a technician, I've got a lot this Eid, inshallah, the film that is releasing, I've got a lot to learn from that film. So I'm very grateful for the team that I'm a part of this film, and I hope that this team stays together and works together. They're a beautiful team, from Amar to Salman Khan Productions to Kabir Productions, and they make some great we might films. do a sequel to this, LED. Salman, here, on towards your right. Here, how are you? सलमान, ये आर्मी बैकग्राउंड पे उठाई गई है इस कहानी, तो क्यों, और कुमाऊं रेजिमेंट ही क्यों?
एंड वी कैन सी पिछली फिल्मों से मैं ये नोट इसमें बहुत बाद में आए हैं, ये जवाब देंगे। अच्छा, लेकिन आपके जो पैट्रियटिज्म है, वी कैन सी योर पैट्रियटिज्म, यू नो, so what does patriotism mean to you? Basically, this is a story about, you know, two brothers based at that point in time, जबकि वो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, कि एक भाई जाता है वॉर के लिए, दूसरा भाई मिन्नतें मांगता है कि ये वॉर खत्म हो जाए ताकि वहाँ के सोल्जर्स वापस चले जाएं, हमारे सोल्जर्स वापस से आ जाए। तो ये है, और उसका यकीन कैसे अपने भाई को लेके आता है या नहीं लेके आता है, वो आप देखिएगा पिक्चर में। जहाँ तक मुझे याद है 62 की जो वॉर हुई थी, चाइना वॉर, तो जैसे अपनी इंडियन आर्मी पहुंची थी तो सीज फायर हो गया था। मुझे याद नहीं, सीज फायर हो गया था। नहीं, कभी सीज फायर हो गया था, 1 महीने बाद हुआ था 62 में। जी, सीज फायर 1 महीने बाद हुआ था। अच्छा जी, so it's set in 62 and the reason why it's set in Kumaon is because the Kumaon regiment was one of the most active regiments in both the fronts of the war, the east and the west, and that's why Sohail's character is a soldier who's My father had gone for the war. Sorry? My father had gone for the war. At the time of ceasefire? Ceasefire. And he came back. Ceasefire पहुंचते से तो I think late पहुंचे होंगे क्योंकि 1 महीने बाद ceasefire हुआ। नहीं, तो जैसे उनकी रेजिमेंट गई थी तो ceasefire। आपको ये बड़ा ही क्लियरली याद होगा क्योंकि उस वक्त आप होगी 25-26 साल की। नहीं, मैं 70 साल की थोड़ी हूँ। Shilpa, you have a question? A role like this must be difficult to play in the part that you have to convey it with a lot of empathy and sensitivity, and it can be very. See, sweetheart, when you sign a film, na, so it's all you'll be able to do the character perfectly. So out here, it's not only walking. Like the most difficult thing, there is because maybe like a character from Hum Aapke Hain Kaun or portray someone. Tubelight is the most difficult thing because suddenly the hero, that man's ego, कि मैं ऐसा perform करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं big challenge in a film like this to maintain that simplicity, the honesty, because everyone tends to get greedy, everyone wants to, here the simpler it is, the better, and goes against you in films like this. Just getting better and better. Neeru from E24. मेरा सवाल आपसे। Where are you, ma'am? यहाँ है। जनरली जो जिस तरह का इंसिडेंस फिल्म में दिखाया गया है, चाइना वॉर के अगेंस्ट सेट किया गया है, ट्रेलर में देख रहे हैं, ट्रेलर से जितना समझ में आ रहा है, तो इस तरह के इंसिडेंसेस जो है वो पाकिस्तान एलओसी पे साइड में या पाकिस्तानी इंडियन साइड पे मिस हो जाते हैं और ऑब्वियसली लोग उनको बहुत ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन आपने कहा क्या ये एक वजह है कि पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी भाईजान इसलिए वापस से रिलीज करते हैं? नहीं, नॉट लाइक दैट। लोकेशन और सेपरेट टाइम, तो जब आप फिल्म देखेंगी देंगे आपको समझ में आएगा कि इसका क्या रेलेवेंस है आज। हाय सलमान, कांग्रेचुलेशंस टू यू। एक मिनट, कभी इसमें आगे बढ़ेगी कि उन दोनों के जो रिश्ते हैं वो भावनात्मक रिश्ते से आती हैं, अब उसके लिए आपको अपनी फिल्म सबमिट करनी पड़ती है। कभी लाइफ में किसी को आपने ट्यूबलाइट कहा या आपको किसी ने ट्यूबलाइट कहा? अभी राजीव यार, कभी चाइना ये फिल्म का आइडिया मेरे दिमाग में था, कुछ चीजें ऐसी हुई थी जो हम जिसके बारे में हम nothing was shown of the Chinese actress Zuzu who is there in the film. Yes, sorry. So she's She's not being shown. So what is that a deliberate reason? Or